जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सो इसमें हम आज के इस लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पैसेज जो इसमें से मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, लैंग्वेज वर्क ऑफ दिस लेसन, और बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट पोर्शंस को ही सिलेक्ट किया है। तो इन पे आप ज़्यादा फोकस रखें जब भी आप एग्जाम में जाएंगे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर इससे पहले के जो अपलोडेड लेक्चर्स हैं वो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 10th इंग्लिश में जाकर वो सारे लेक्चर जो इससे पहले अपलोड किए जा चुके हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का लेसन स्टार्ट। सो लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एने मैरी, दैट्स बेसिकली एने फ्रैंक। सो इसका जो लेसन है वो बेसिकली हम पहले से पढ़ा चुके हैं। तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो टेक्स्ट में आता है, was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? So answer for this is no, Anne was right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl. Her diary was published under the name The Diary of a Young Girl in 1952. It was translated from its original Dutch into many languages and it became one of the world's mostly read books. There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the diary, this one diary. Hence, Anne proved wrong in what she said basically. Now coming back to the question number 2, that is in which language was the diary of Anne Frank originally written? कि किस लैंग्वेज में बेसिकली वो डायरी लिखी गई थी? तो द डायरी ऑफ एने फ्रैंक वाज ओरिजिनली रिटन इन द डच लैंग्वेज। तो ये जो डायरी थी बेसिकली डच लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एने नीड टू गिव ब्रीफ स्केच? व्हाई डज एने नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली लाइफ? Does she treat Kitty an insider or outsider? Annie needs to give a brief sketch of her family life in her diary, Kitty, because she thinks that no one will understand a word of her stories, क्योंकि वो ये समझती थी कि बेसिकली कोई भी उसकी इस स्टोरी का एक वर्ड भी समझ नहीं पाएगा इफ शी कम्स स्ट्रेट अवे टू द टॉपिक, अगर वो डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाती है। शी देयरफॉर रोट ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, तो इसीलिए उसने एक छोटा सा स्केच लिखा ताकि लोग डायरी को समझ पाए। इवन दो शी डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि उसको ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर बिकॉज शी कॉल्स इट हर ट्रू फ्रेंड and shares her most intimate feelings with it. So यहाँ पे हम एक सिंपल सी लाइफ का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो इसलिए इंसाइडर थी क्योंकि वो उसे एक फ्रेंड समझती थी और वो बातें जो किसी से नहीं बोल पाई उसने इस डायरी के अंदर मेंशन कर रखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एने फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडफादर, मिसेस कूपरस एंड मिस्टर कीजिंग? Annie feels that her father is the most adorable father whom she has ever seen. So सबसे important जो है अपने फादर को बहुत इज्जत देती है वो, और सबसे important मानती है। She loves her grandmother very much. She often misses her even after her death in January 1942. Mrs. Cooper's is the headmistress of the school where Annie studied up to 6th class. She is very much attached with Anne. She is friendly and loving teacher as well. And at the end of the year, they are both in tears when they bid a heartbreaking farewell. So सबके बारे में एक अलग सोच है। Anne फील समझती है कि उसका बाप एक अडोरेबल, सबसे प्यारा, इज्जतदार आदमी है जिसके साथ वो रहती है, और अपनी दादी से भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हालांकि अपने एक बर्थडे पे वो एक शम्मा जलाती है केक के ऊपर अपनी दादी के नाम का। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट हाउ शी फील्स अबाउट दीज ऑल। और जो कूपरस थी जहाँ तक उसने 6 से पढ़ा हुआ था,
और उस स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी उसको भी बहुत ज़्यादा मिस करती है, क्योंकि वो एक बहुत लविंग केयरिंग टीचर होती है, और ये सारी चीज़ें हैं। सो जब वो फेयरवेल कहने जाती है तो बोथ के जो दोनों के आंसू में दोनों की आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। शी इज़ फ्रेंडली एंड लविंग टीचर एज वेल। और मिस्टर कीजिंग के बारे में उसका ये मानना है कि ही इज़ अ स्ट्रिक्ट एंड ओल्ड फैशनेड पर्सन। वो एक स्ट्रिक्ट आदमी है और एक ओल्ड फैशनेड पर्सन है। टीचर मिस्टर कीजिंग एनी सेज दैट he is strict and old fashioned and he is annoyed with her long time because of her talkative nature। और वो समझती है कि वो उसकी talkative nature की वजह से बहुत इनाय रहते थे सर। Question number 5, why does Anne write in her first, what does Anne write in her first essay? The topic of Anne's first essay was a chatterbox. She wanted to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. What does Anne was the first in her first write essay? तो उसने जो पहला essay दिया गया था वो एक चैटर बॉक्स पे था, बातूनी टाकेटिव नेचर पे था। She wanted to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking। उसने कोशिश की कि वो ऐसे reasons बता सके उस टॉपिक में जो necessity of talking को प्रूव करे। She thought deeply, उसने बहुत deeply सोचा and wrote about 3 pages on his topic। और इस टॉपिक पे 3 पेजेस लगभग उसने लिखे। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। और उसने ये माना कि ये स्टूडेंट्स की आदत होती है बात करना, एंड शी वुड बी डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और वो करेगी कोशिश कि बातों को बहुत ज़्यादा रोका जा सके। शी फर्दर एडेड दैट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ इफ ऑफ द हैबिट सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच। और वो ये भी कहती है कि ये उसको एक हेरिडिटल आदत है, और जो उसकी माँ जो थी बहुत ज़्यादा बात करती थी। व्हेन मिस्टर कीजिंग रीड इट ही हैड अ गुड लाफ एट दीज आर्ग्यूमेंट्स। जब उसने फाइनली इसको रेड किया, इसको पढ़ा, तो उसे ऐसा लगा कि यस, ये बेसिकली अच्छे आर्ग्यूमेंट्स थे, और उस पर बहुत ज़्यादा हंसी भी आई। And he says teachers are the most unpredictable. Is Mr. Keesing the unpredictable? Please tell me how. Yes, Mr. Keesing is unpredictable in the sense of allowing Anna to talk in the class. Otherwise, no teacher will allow the student to talk in the class. क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो जब भी मन में वो सिस्टमैटिक अंदाज हो पढ़ाने का, ठीक है, जब आप किसी टॉपिक में बहुत डीप हो, जब कोई बात करता है तो बहुत ही बुरा फील होता है, ठीक है। लेकिन जब आप मूड में हो, जोकिंग मूड में हो, या आप कोई नॉर्मल बात कर रहे हो, देन इट्स नॉट एन इशू, इज इट राइट? सो टीचर्स को अनप्रेडिक्टेबल मानना बहुत अच्छी बात नहीं है। He assigns an essay on the topic a chatterbox to Anne as a punishment for talking too much in the class। और वो एक पनिशमेंट देते हैं एने को एक टॉपिक लिखने की, जिसका टॉपिक का नाम चैटर बॉक्स होता है। सो एने राइट्स अबाउट 3 पेज ऑफ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूविंग द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आफ्टर ही हैंड्स ओवर टू द एसे टू द मिस्टर कीजिंग, एने थिंक्स दैट ही विल नाउ अलो हर टू टॉक इन द क्लास। और ऑब्वियसली वो इसको कन्विंस करने में कामयाब भी हो जाती है। वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेके आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और लास्ट पे कीजिंग उसको अलो करते हैं कि आप क्लास में बात कर सकते हो। When Anne continues to talk through the next lesson, her assign her the second essay and an incorrigible talk chatterbox, ठीक है। And however it's the army after receiving the third assignment, the essay entitled quack quack quack, जो ऐसे दिया था लास्ट वाला, said Mr. Chatterbox said that Mr. Keesing allows Anne to talk in the class। So ये एक बहुत ही amazing thing हुई थी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज वर्क के बारे में, जो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज वर्क है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक द नोट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। यू कैन स्टॉप द वीडियो, आप वीडियो को बीच में रोक के ये सारी चीजें देख सकते हैं। लैंग्वेज वर्क, मैच द कंपाउंड वर्ड्स ऑफ अ कॉलम विद कॉलम ए विद द मीनिंग इन द कॉलम बी, देन यूज ईच सेंटेंस इन पर्टिकुलर सिचुएशन। तो पहला वर्ड जो है आपके पास है हार्ट ब्रेकिंग, प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब क्या होगा? प्रोड्यूसिंग ग्रेट हार्डनेस। और उसके बाद अगर इसका हम सेंटेंस बनाए, द न्यूज ऑफ डॉक्टर स्ट्रास डेथ वाज हार्ट ब्रेकिंग। होम सिक, मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच। ये इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो यू कैन जस्ट से व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन अ बोर्डिंग स्कूल ऑलवेज फेल्ट होम सिक। तो उसके बाद है ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड मीन्स दैट, सो एन इनफॉर्मल वर्ड, a very stupid person,
A blockhead is always the cause of trouble to that. तो एक blockhead का person जो होता है वो हमेशा दूसरों के लिए दिक्कतें दुश्वारियां पैदा करता है. Law abiding, obeying and respecting the law. So a law abiding person can never be a criminal. So कितना आसान है और बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है. फिफ्थ वाला है overdo, do something to an excessive degree. Is it right? बहुत ज्यादा किसी चीज में मगन हो जाना या ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना. वी शुड नॉट ओवरडू इन इरिगेटिंग द फील्ड्स. हमें ज्यादा खेतों को पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे खेत खराब भी हो सकते हैं. डे ड्रीम, थिंकिंग अबाउट प्लीजेंट थिंग्स, ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो पॉसिबल नहीं है. फॉरगेटिंग अबाउट प्रेजेंट, फॉरगेटिंग अबाउट द प्रेजेंट के बारे में फॉरगेट हो जाना. टीनेजर्स आर आफ्टर लॉस इन डे ड्रीम्स, और टीनेजर्स जो होते हैं वो हमेशा डे ड्रीम्स में लॉस हो जाते हैं. माई कार ब्रोक डाउन एट लाल चौक. नाउ आउटपुट समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन, और उसके बाद ब्रेक डाउन जो है एन ओकेजन व्हेन द व्हीकल्स मशीन्स स्टॉप वर्किंग, इसे ब्रेक डाउन कहा जा सकता है. नाउ माई कार ब्रोक डाउन एट लाल चौक, पास्ट में यूज हुआ है. सो आउटपुट the last one here, and this is something produced by a person, या output हम कह सकते हैं machine or organization, किसी भी चीज का output. If you work hard, you will get the better output. Now coming back to the next here is actually find the sentences in the lesson that have phrasal verbs given below. Do it yourself. Plunge in, it's actually going straight to the topic. किसी भी टॉपिक में स्ट्रेट जाके घुस जाना विदाउट एक्सप्लेनिंग द बेसिक क्राइटेरिया. केप्ट बैक, नॉट प्रमोटेड. सो मूव अप मीन्स टू गो टू द नेक्स्ट ग्रेड. एंड रैम्बल ऑन, स्पीक और राइट विदाउट फोकस. इज इट राइट? गेट अलॉन्ग विद, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद. calm down, make them remain quiet. Stay, it means that stay indoors, घर में रहने को. make up for, compensate करने को कहते हैं. hand in, give an assignment or homework to a person in hand. Is it right? So ये basically कुछ situations हैं जो बहुत ही simple हैं और बहुत ही easier हैं. So let's talk about the next, and that is basically the third one. Here are the few sentences from the text which have idiomatic expressions. Can you say what each means basically? Our entire class is quacking in the boots. एक idiom use किया गया है यहाँ पे. Trembling with fear, डर के मारे कांपना. Until then we kept telling each other not to get discouraged. Lose heart, to get discouraged. Discourage हो जाना, हिम्मत हार जाना जिसे हम कहेंगे. Third one, Mr. Keesing was annoyed with me for ages because I talked so much. For ages, for a very long time. It means for a बहुत लंबे अरसे तक. Aged का मतलब होता है बहुत लंबे अरसे तक. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure joke was on him. और मैं ये श्योर करूंगी कि जोक उस पे हो. The joke has backfired on someone. तो इसका मीनिंग क्या होगा? जोक हैज बैकफायर्ड समवन. उसके बाद जो इसका सेकंड है, हियर आर फ्यू मोर idiomatic expressions that occur in the text. Try to use them in the sentences of your own. So the first is caught my eye, to have a look at something suddenly. किसी चीज की तरफ ध्यान चला जाना या उसकी तरफ आंख चली जानी. He had enough to have something in excess. दूसरा, I was walking down the stairs when my lost pen caught my eye. He had enough to have something in excess. After several successful attempts to get the government job, he decided that he had enough and established his own private business. Is it right? Laugh ourselves silly, laughing uncontrollably. बहुत बड़े तरीके से जिसे हम कहेंगे बदतमीजी से हंसना. ठीक है? We laughed ourselves silly at the funny action of being. Cannot bring myself to, not be able to do something that you think is unpleasant. I can bring myself to tell my parents about my marks obtained in the class test. Now, moving to the next part is a very simple and a very easier thing, that is match the following. Journal. Journal is basically a written record of event when times and dates usually official. और मैप के नीचे जो बेसिकली वो अगर आप देखें ना, मैप के नीचे
कोई भी आप सोशल मैप उठा के देख लें या कोई इंडिया का मैप देख लें, उसके नीचे जो बॉक्स बना होता है ना, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इसका स्केल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो उसे भी जर्नल ही कहा जाता है. तो डायरी, अ बुक विद अ स्प्रेड स्पेस और पेज ऑफ ईच डे in which you write down your thoughts and the feelings or write what is happening in a day. Log, a full record of the journey, पूरी जर्नी का फुल रिकॉर्ड होना है. पीरियड ऑफ टाइम आर एन इवेंट रिटन एवरी डे. उसके बाद होता है मीमियर, इज इट राइट? सो इसका क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनस ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, यूजुअली अ फेमस पर्सन, जिसे हम बायोग्राफी कह सकते हैं, या बहुत ही इंपॉर्टेंटली कोई सीक्रेटली कुछ चीज़ों को लिखने की कोशिश करते हैं लोग. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्शन फ्रॉम द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग. जो ये जो है आपका वी है, इसके बाद जो एक पोर्शन है उसको हमने छोड़ा है बिकॉज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सो नाउ ही swallowed certain rare drugs and dash dash body became transparent. और यहाँ पे अगर हम प्रोनाउन की बात करें, सो विच प्रोनाउन वी विल बी यूजिंग हियर? अ वेरी सिंपल, इफ यू ऑब्जर्व दैट, सिंपल यूज करेंगे हम. Okay, so it is going to be like in this situation it is his, is it right? पहली सिचुएशन में हमारे पास जो है वो his जो है वो यूज होगा इस वाले में. ठीक है. so just a second. Okay, now coming back to the next part here, if you just check it out. So yes, I'm just making it sure that it's going to work. Okay. Now see, the horse fell down and broke dash dash leg. Is it right now? Its leg. Singular hai. So that's why it's. There are 6 doors in the room, but dash dash are all closed. Is it right now? But they are all closed. क्योंकि plural है, doors का form use हो रहा है, तो इसलिए they का use होना बहुत ज़रूरी है. I cannot find dash dash watch. I cannot find my watch. Very simple. So it's hard to believe that dash dash have changed the dash dash approach. Is it right now? So that we can say that it's hard to believe that they के सामने have लगना ज़रूरी है. So that's why they have changed their approach. their their approach. Now if you just observe this situation here, just a second. Okay. Yes. Now here if you just check it out, this book is basically, यहाँ पे बहुत सिंपल है. बुक की बात हो रही है, एक सिंगुलर एटम है. ठीक है. दिस बुक इज यूअर्स, दिस बुक इज माइन, सो वी कैन राइट इट एज द बुक इज यूअर्स. ओके, बुक इज यूअर्स. नाउ इज दैट माई बुक आर यूअर्स? इज इट राइट नाउ? या इसमें आप माइन लगा सकते हैं. सो देयर इज नॉट एन इशू, इसमें आप माइन लगा दो. So in this part, is that book, is that my book are yours? तो यहाँ पे आप yours लगा सकते हो. Obviously YOUR and then S. Now, okay, if you just talk about just increasing a bit thickness of this, is it right? Now see. Okay. Now, nobody but dash dash was absent. Nobody but. When you talk about a particular person, is it right now? But he was absent. क्योंकि एक ही की बात हो रही है. But he. I found dash dash very helpful. I found this very helpful. You can use. I found him very helpful. We can use it as well. Is it right now? So I found him भी आ सकता है. Now, wait for dash dash or go with dash dash. Wait for me or go with her. With him भी आ सकता है, or go with him. Is it right now? With her oblique him, you can use it along with that. Now coming back here, this fill in the blanks portion is done. So now is the important portion. Is it right now? और important portion में आपके पास क्या है, अगर आप समझ सकते हो तो important portion में आपके पास basically है passages, और obviously इन passages का writing portion. Is it right now? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पैसेज की राइटिंग पोर्शन का, तो पैसेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली यूटिलाइज करनी है, और इनमें जो है बेसिकली हमें वो सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं
और इसके आधार पे जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए हैं उनका क्वेश्चन आंसर्स भी जो हैं आपको देने पड़ेंगे. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट ये जो पैसेज जो हमने लिया है ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20 से है. सो पैसेज 1 में क्या है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. हमने चाहा कि जितने भी पैसेज पॉसिबल हों वो हम निकाल पाएं इससे. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of the difference. So give the antonyms means the opposite of. So is it right now? We are just going with the same antonyms. More. अगर हम more की बात करेंगे, okay, just a second. Okay, this one. यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, एंटोनियम की अगर हम बात करते हैं तो एंटोनियम में हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, इज इट राइट नाउ, दैट्स मोर. सेकंड ऑप्शन इज बेसिकली द पेशेंस. थर्ड वन इज रियल एंड देन इट्स एवर. सो मोर के लिए सिंपली इसका एंटोनियम जो है आप लिख सकते हैं. एंटोनियम इज बेसिकली, ओके जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, लेस. मोर के लिए आप लेस का यूज करेंगे. पेशेंस मीन्स सब्र रखना, ठीक है. तो इम्पेशेंस, इसका सिंपली आप आई एम लगा दो एंड देन कीप विद द पेशेंस बैक, इम्पेशेंस. उसके बाद है हमारे पास रियल. रियल का क्या लिखेंगे हम, फेक और इमेजिनरी, इज इट राइट. तो बेसिकली रियल का हम लिखेंगे इमेजिनरी. सो क्योंकि रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स तो सबको मालूम होना चाहिए ना. सो दैट्स गोना बी लाइक इमेजिनरी. एवर एंड एवर कभी भी, एंड इसका जो एंटोनियम आएगा दैट विल बी लाइक नेवर, कभी भी नहीं, इज इट राइट. So now we are taking some fill in the blanks from the same. Fill in the blanks. In the above passage, in the above passage refers to. I किसको refer कर रहा है? Basically अगर आप अच्छे से देखेंगे, I is referring to Anne Frank. जो writer है या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, Anne Frank को refer कर रहा है. Anne Frank, F-R-A and then N. So according to the writer, paper has more patience. अकॉर्डिंग टू द राइटर, पेपर के पास बहुत ज्यादा पेशेंस होती है एज कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स. शी कॉल्स हर नोटबुक अ डायरी. इज इट राइट नाउ. वो अपनी नोटबुक को एक डायरी का नाम देती है. शी वुड लेट नो वन रीड हर डायरी. वो ये चाहती है कि उसकी ये डायरी जो है वो कोई भी नहीं देखे, अनलेस शी फाइंड्स अ रियल फ्रेंड. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनलेस शी फाइंड्स अ रियल फ्रेंड, अनलेस शी फाइंड्स अ रियल फ्रेंड, जब तक ना उसे एक रियल फ्रेंड जो है वो मिल जाए. एंड लास्ट वन इज पेपर हैज मोर पेशेंस देन. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इज इट राइट. सो लोगों से ज्यादा पेपर, क्योंकि पेपर आपकी बात हमेशा आपके पास रखेगा, किसी दुश्मन को जाके नहीं बताएगा. गिव द synonyms of the following means that same words referring to this. Grandly means the truly, is it right? So or you can say that very simply, impressively, or I can use the very simple word for that, that's impressively, impressively. And real, is it right now. Real ka jo meaning hota hai are same meaning, so that is basically true. So this is the passage number 1. Let's come back and solve passage number 2, which is again given on page number 20. My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland and in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margaret went to Holland in December and followed in February when I was plunked down on the table as the birthday present to Margaret. Is it right now or for Margaret? Plunked down. So give the meanings of the following words. Very simple है. Plunk down का क्या मतलब होता है basically? अगर हम बात करें इस वर्ड की कि प्लंग डाउन, इज इट राइट नाउ,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे सबसे जो मेन चीज है यहाँ पे, ठीक है. सो प्लंग डाउन एंड देन देयर इज अडोरेबल, इज इट राइट? एंड देन दिस नेक्स्ट वर्ड इज प्रेजेंट एंड देन इमिग्रेटेड. सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लंग डाउन. थ्रू एंड डाउन हम सीधा लिख सकते हैं फेंक देना जिसे, यानी कि टेबल पे पटक देना, ठीक है. थ्रू एंड डाउन. adorable means loving, caring, loving. Present, is it right now? तो present में present means the gift here, is it right now? ये वो वाला present नहीं है, यहाँ पे एक gift है, gif. Immigrated means to changing the place, is it right now? So immigrated means migrate करना. Migrated meaning will be like migrated. So this is done. Now coming back to the next part. Again, the fill in the blanks. Now the writer calls her father what? The most adorable father. ठीक, तो बहुत सिंपल है. फादर ने अपने जो राइटर है उसने अपने बाप से क्या कहा कि ही इज बेसिकली द मोस्ट एडोरेबल फादर. मोस्ट एडोरेबल फादर. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट. हर सिस्टर वॉज बॉर्न इन. उसकी सिस्टर कहाँ पैदा हुई थी? So written in the paragraph is already given, is it right now? Her sister was born in 1926, is it right now? In Frankfurt. 1926 in Frankfurt. Frankfurt. So Frankfurt. Now if you just check, okay, I'm just using a very simpler, at least this one. Now she and her sister stayed with their grandmother in, where they basically stayed in the city HN, is it right now? Okay, it's very thick, so I'm changing again. This line should be there. Okay, yes, this one. So that is actually the same, ACHEN, is it right now? HN mein wo a double A is there, AACHEN. Now so yes, the writer calls herself as a birthday gift, is it right now? Our birthday present, क्योंकि उसको उसकी बहन के लिए as a birthday present ही तो पेश किया गया था, so you can call it as a birthday present. Now second, Margaret went to Holland in December 1933. In December 1933. In December 1933. So I hope you are अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. एंड प्लीज़ जस्ट अगर किसी को किसी भी जगह दिक्कत होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. टीम विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू अकॉर्डिंगली. So this is the passage number 3. Our entire class is quacking in the booth. The reason of this course is a forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up into the next form and who will be kept back. Half the class is making the bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys sitting behind us. So Sin and Jacques, who has taken their entire holidays sitting in their bed from morning to the night. It's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even GS pleading glances and many angry outbursts cannot calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures of the earth. They can do anything. Is it right now? The questions based on that. So find out from the passage the words, phrases which mean the complete. Is it right now? So here in place of complete, this is used as entire class. Is it right now? Entire, INTIRE. About to happen, yani ki just about to happen. Forthcoming, we can say that. Is it right now? Forthcoming. Forthcoming, a very simple meaning. Begging looks. Begging looks का क्या मतलब होता है? Pleading glances, you can say. Is it right now? Pleading glances आप लिख सकते हो इसको, जिससे हम बहुत simple words में pleading glances, झुकी हुई नजर का कमाल. Okay, then here is duets, and what that basically duets means. Is it right now? So this is dummies, or you can use that. Dummies is the word basically used here for the same. Now coming back here is the next one. That's the fill in the blanks again. Our entire class was quacking because their, is it right now? Their annual results are going to come. Is it right now? Their annual results are there to come. Their annual
Results are basically there to come. From morning to the night, the students keep on talking about the possibility of getting, is it right now, pass or fail. सुबह से लेकर शाम तक स्टूडेंट्स किसके बात में बात कर रहे थे, क्या वो पास हो जाएंगे या वो फेल हो जाएंगे. द राइटर एंड जी एन आर डैश डैश एट सी एन एंड जैक वाज सिटिंग बिहाइंड. आर बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व लाफिंग, वो क्या कर रहे थे, उन दो लड़कों के पीछे लाफिंग कर रहे थे जो उनके पीछे बैठे हुए थे. The two boys have dash dash. Two boys have dash dash their entirely day saving. Two boys have stacked. पूरा दिन वो इसी काम में लगे हुए थे कि yes, you are going to pass, I'm not. And you are going to pass, I'm not. This is the same situation. Okay. Now coming back is the next paragraph. That's paragraph number 4. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches the maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I had worried about the same later, but I decided to jot down some little in my notebook, title in my notebook, and tucked it in my bag and tried to keep quiet. So here, some of the words and for which we are actually going to write out the synonyms there. Is it right now? So the first is pretty, quite, extra, and then assign. So pretty is going to be very simple if you observe that. Then there is quite and okay. Yes, I'm going to use them as well. So if you observe that for the first, that is quite means we are just writing the synonyms, means that same meaning. So for quite it will be like silent. Extra means enough. Is it right now? You can just call it as enough or additional as well, a lot as well. Is it right now? So extra means additional. Is it right? And additional, yes, it's going to be like additional, extra. So assign means allotted. Is it right now? Assign means basically allotted. Assign, or you can simply say that allot. And pretty here is used as a quite. Is it right now? Pretty. Now, if you are moving to this next part, and that's again going to be the fill in the blanks. The total number of teachers working in a school were. Is it right now? So total number of the teachers working in the school was, is it right now, 9. The number 9 here basically represents, is it right? So इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, was में converted है, so that's going to be like 9 dashes here. Mr. Keesing was annoyed for ages. The phrase for ages means for a very long time. It means for ages का मतलब क्या हुआ, बहुत अरसे के लिए, for a very long time, for a very long time. Now the essay dash dash was assigned to the author as extra homework. The essay, which essay was assigned? A chatterbox. तो क्या था वो essay? A chatterbox. A chatterbox was the essay. BOX, chatterbox. The number of the male teachers dash dash the female ones. Is it right now? Exceeded here. Is it right now? You can say that they are extra. It means you can write it as exceeded. Our number of male teachers are more than female ones. You can still write the same as well. Moving with the passage number 5. That evening, after I had finished my rest of the homework, the note about the essay caught my eye. I began to think about the subject while shaving a tip of my fountain pen. Anyone could ramble on leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments. So हाँ, बहुत सिंपल सी बात है कि जब इसकी आए यानी कि ये चाहती है कि वो लिखे वो पैराग्राफ जो उसे दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि बड़े बड़े गैप छोड़ के और इसको जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी की जाए. वो चाहती थी कि वो कन्विंसिंग करे, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लेके आए जिससे टीचर जो है वो कन्विंस हो जाए. तो ये पैराग्राफ आपके पास दिया हुआ है. वी विल मूव विद द क्वेश्चंस पार्ट एज वेल. इज इट राइट नाउ? सो द फर्स्ट वन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन द कॉलम बी. तो रैम्बल्ड, अगर यहाँ पे हम रैम्बल का मतलब करेंगे टू राइट. रैम्बल मीन्स टू राइट डिसकनेक्टेडली. इज इट राइट नाउ? यानी कि दिल से नहीं, कुछ भी जो मन में आए उसके साथ लिखना. टू राइट दिस connectedly. Convincing. Is it right now?
So if you observe that, what should be the meaning of convincing? Here the options are distinguishing feature, got from the family, and there is the reasonable. Is it right now? So convincing का जो है वो reasonable इसका सबसे most appropriate आ रहा है. Trait, is it right now? एक ऐसी आदत जो खसलत हो, जिसे हम कहें ना, जिसे हम छोड़ नहीं पाते. Inherited means that distinguished feature. Distinguished feature. Inherited means that okay, no, inherited means, sorry, that's gonna be like ना इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने. So this is not with that. Okay, trait means that this one. Okay, so yes, inherited means got from family. जो family से आता हो उसी तो heredity कहते हैं, and trait is basically a distinguished feature. Now coming back to the next part of this is again going to be a fill in the blanks. Mr. Keesing was dash dash in the writer's school. Mr. Keesing was a teacher in the writer's school. So simple hai, or you can write it as a maths teacher. Is it right? So he was a teacher basically. He had assigned the write an essay on the chatterbox. On chatterbox. Is it right now? A chatterbox. So then according to the writer, dash dash is a student's trait. Talking, is it right now? Basically बात करना ये स्टूडेंट की आदत होती है और इसमें कोई शक भी नहीं. ठीक है. Talking. Now she said that her habit of talking was and dash dash one and was difficult to inherited one. यानी कि जो घर वालों से आती है, जिसे हम आदत नहीं खसलत कहते हैं. ठीक है. Inherited. TED. So this is the one here. Now coming back, one more paragraph, two more rather. So this is one here, and I'm just going with the questions based on that. Write down the antonyms of the following. Enough. Enough means basically extra, more. जिसे हम कहेंगे enough का मतलब ज़्यादा होता है. तो इसका एंटोनियम अगर हम लिखें तो insufficient, जिसे हम कम कहेंगे. Insufficient. Is it right now? Insufficient. Yeah. Incorrigible. Is it right now? So इसका एंटोनियम क्या होगा? बहुत सिंपल है. Corrigible. Just remove the N and rest part is the answer. And next, give the synonyms of the following. Proceed. Proceed means moving ahead. Is it right now? Or start. Assign. Assign means again. This one assign is here to give. Now coming back to the next, and that's again the fill in the blanks based on that paragraph जो मैंने पढ़ा नहीं है, आपको खुद से पढ़ना है, and just you have to keep it in the mind. Mr. Keesing had a good dash dash at the argument. Had a good laugh at the arguments. Is it right now? Mr. Keesing ने एक अच्छी हंसी laugh जो है वो basically करी. The second essay was an incorrigible chatterbox. An incorrigible chatterbox. 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 उसके बाद Mr. Keesing did not complain for the next lesson. Is it right now? For the next two lessons rather. क्योंकि पैराग्राफ में next two lessons है और टेक्स्ट बुक में भी next two lessons है. Two whole lesson rather, more specific. Now Anne Frank was again punished for what? Talking in the class. क्योंकि उसका यही तो काम था कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी. Talking in the class. Okay. Now see that here, the last paragraph of the session, and this is the one. This is again page number 22. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and the father swan with 3 baby ducklings that were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke in a right way. He read the poem in the class, adding to the his own comments and several other classes as well. Since I have been allowed to talk and have not been assigned my extra homework, on the contrary, Mr. Keesing always making jokes these days. So give the synonyms of, again, some words are basically there. Is it right now? So now, if you just talk about finish it. Finish it means that completed. Same meaning. So it's going to be like completed for this. Beautiful. Is it right now? So yes, for beautiful here, if you just observe that, we can use it as charming. For beautiful, we can use it as charming. For much means extra. Is it right now? So very, we can use very simply. For much, it's going to be like very. And for right is actually going to be correct one.
So this is the situation. Now the last fill in the blanks of the session are here. Fill in the blanks. The writer calls her poem beautiful because it dash dash Mr. Keesing's dislike of her. It ended basically the liking of her. Is it right now? Paragraph में दे रखा है ये. It ended. Now Mr. Keesing dash dash the writer's poem very much. Enjoyed here. Enjoyed the writer's poem very much. The third one, he stopped giving the writer extra homeworks. So उसने अब बंद कर दिया राइटर को extra homework देना. She was also dash dash to talk in the class. She was allowed to talk in the class now. ठीक है, मोजा ही मोजा हो गई बंदी की. ठीक है, तो चलिए this basically concludes our today's lesson and I hope ये सारी पैराग्राफ्स आप एग्जाम में देख के जाओगे और I will definitely be sure कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो चलिए लेसन को ख़त्म करने से पहले सबको बता दें कि नेक्स्ट लेसन जो है बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हिस्ट्री के रिलेटेड शॉर्ट स्क्रिप्टेड नोट्स और शॉर्ट जो है रिवाइजिंग नोट्स भी हम जल्दी बनाएं ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में. जब तक के लिए वी आर गोइंग टू टेक द बाय. अप टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय ईच एंड एवरीवन. थैंक यू for joining the class. Thank you.